Normalization, we'll start with the normalization first. My voice is clear or not? Yes or no? Yes, so you are clear. Okay, okay. Okay. So normalization, we'll do this topic today. Normalization is a data pre-processing technique used in data analysis and machine learning to scale numerical features to a standard range. This process help, yeah, basically, like what we do a little bit of scaling our data. Okay, so like if your data is uneven a little bit, for example, this is the best animation I can show you. See, yeah, see, uneven data is now scaled in a very proper way. How we can we achieve this? We can achieve with some kind of process which I will be telling you here. There is two kind of process we have. So this process help us to ensure that all the feature contribute equally to the analysis or model training process. Yeah, our one of the features should not be deciding our complete model, right? So like we have to avoid this kind of issue if any of the data is too much tall or very small. So we have to put it in a way so that every data is showing some value, not only some part only which is showing the value. Okay. So it is saying avoiding issues where, yeah, avoiding issues where features with larger ranges disproportionately influence the model. Key method of normalization, like how we can do this, how we can achieve. So min max, okay, min max is one kind of is the way which we can do, like that is called rescaling. So it scales the data to a fixed range like 0, 1. For example, the formula is given here, x minus x minimum, you should know from your data that what is your minimum max. Okay, you should know your data. I will just also show you some example how to do this. Here we are doing with example. So this is the formula. Okay, you are a random variable, random data minus x min divided by maximum minus minimum. Okay, so x is your original data, x minimum is your minimum data, x max is your maximum. Method is useful when the data does not contain outliers. Okay, so let's see example first. Suppose you have a data set like 2, 10, 15, 20, like all this. How we can apply here, like you can take any of the values, x minus 2. 2 is the minimum, 30 is maximum. Yeah. So first of all, the x was 2 in the beginning, so it is that's why it is 0. You will see here. Next is 2, x is our 10. So it will be 10 minus 2 upon 28. So you will get this. Students, subtract this. Are you really getting this? Confirm once. 10 minus 2 upon 28. Yes, yes.
0.28 is correct answer. Same will happen. You will get 0.46 when you get 15. Okay. This is how min max with the process of min max you can do. So basically, this method is useful when data does not contain outlier. See, if your data is containing an outlier, you should not use this outlier. What is the outlier? Please, everybody answer me. What is the outlier? In the chat section, please. Extreme values. Yeah, noise error. Yes, correct. Right. Okay, fine. Noise error. Yes, that is fine. Okay, let's come to the second type. Just read this for 1 minute. I'm coming. Okay. So what do you think? What this Z score normalization is saying? What's the process of this one? This method scales the data based on the mean and standard deviation. Very nice. Is almost like Z square. Yeah, Z score, right. So your data minus mu. Mu is the mean upon sigma. Sigma is standard deviation, right? So you can do this. This method useful when the data contain outlier. So at its center, the data around a zero with a standard deviation of one. So this is also very nice concept. For example is given over here. This. Assuming that we have the mean as 15.4, standard deviation this, and use the formula. Use your same data, this one, 2, 10, 15, 20, 30. You will get something like this, right? Okay, so now it is necessary that we should run our Python code also. Then I will go to the reason that why it's a real life application and all that. I will come to that part.
import numpy and from sklearn import min max scalar. So actually इसके नाम से एक पूरा हमारा फंक्शन है min max scalar, ठीक है. So your data is this, reshape it in a column format, import your data and make it a variable. उस वेरिएबल में फिट करना है अपना डेटा. ओके, वी विल फिट इट. X min max. So first of all our original data set is here. चलो मैं रन करके दिखाता हूँ. और उसके बाद एक्स मिन मैक्स जो हमारा स्केल डेटा था, जो हमने स्केल कर दिया, वो वाला डेटा है यहाँ पे. इट्स रनिंग, ठीक है. ओरिजिनल डेटा हमारा 2 10 15 ये सब था. स्केलिंग के बाद देखो ये आ गया हमारा डेटा, राइट. ठीक है. जस्ट 1 मिनट. यहाँ पे मैं कुछ और भी एक चीज़ करना चाहूँगा. फॉर एग्जाम्पल import matplotlib dot pyplot as plt. So let's try plt dot histogram and I will pass my data. Let's see what I'm getting, and before the data and after, like, okay, so this one is the before scaling. Okay, so what I'm getting after scaling, so you can write here this data x min max scalar. Okay, right now it is not showing any difference here because scale is almost same. It's not showing any difference, but yeah, the data is decreased a little bit. You can see it is going from 0 to 1. But in the case of our normal data, original data,
How many points we have? Wait, let me see what happened here. Oh, sorry, sorry. My data should be flattened, like it should be. Yeah, so this was the original data we have. Okay, so let me try and buy the new data now. Students, can you see a little bit of here? What we orange color? Can you see? So this is basically see. This is how it scales. थोड़ा बहुत कम कर दिया इसकी जो मैग्नीट्यूड है, राइट? तो यही स्केलिंग का यही फायदा है। इतना कुछ बहुत बड़ा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू मेक टू मच बिग। ओके, सो लाइक इट जस्ट स्केल्स अ लिटिल बिट। थोड़ा बहुत भी हाइट मिला तो इट्स ओके। जस्ट 1 मिनट। ओके, ठीक है। तो इस पे से ऐसे किया हमने। अब बाकी विद द हेल्प ऑफ जेड स्कोर।
With Z score also we have some, you can see numpy as NP, and you can standard scalar you can call import. Your data is here. Standard scalar is object is intensified here. Like sorry, we made a instance of this instantiation, and here we are giving our data as a fit, which will give us X Z score. Okay, so this is your flatten way. Okay, let me put this also. Like I want to create. Let's see how it is making difference. So you have to use all of this to see that change. Oh, sorry, I forgot to run this. Wow. See, mean was there. That's why अगर उसको लगता है कि mean के थोड़ा कम है तो it is going at the bottom of it. सारा कुछ mean को reference रख के है ना. You can see that how much scaling is now dropped a lot. तो इस मीन से कितना ज्यादा है, थोड़ा सा ही ज्यादा है, बस इतना ही चाहिए हमको. इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो उससे ज्यादा है. जरूरी नहीं कि हम लोग ओरिजिनल डेटा की तरह खूब ज्यादा इसको स्केल अप कर दें. इट्स नॉट रिक्वायर्ड. बस रेशो चाहिए हमें कि कितना कौन किससे पड़ा. दैट्स इट. ठीक है. तो इट इज अ पार्ट ऑफ प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा बिफोर वी मूव. अच्छा, व्हाट इज एप्लीकेशन लाइक, व्हाई वी नीड टू नॉर्मलाइज डेटा. यू विल सी इक्वल कंट्रीब्यूशन. तो लार्जर रेंज वाला डेटा इट विल नॉट डोमिनेट. तो बेसिकली मशीन लर्निंग के कुछ इंटरनल जो भी हमारे एल्गोरिथम्स होते हैं वहाँ पे भी हमारे को हेल्प मिलती है, इम्प्रूव्ड कन्वर्जेंस, राइट. तो के नियरेस्ट हो गया, आपका ग्रेडियंट डिसेंट हो गया. तो इन चीज़ों में आपका डेटा नॉर्मलाइज है, तो इट इज़ वेरी गुड. जस्ट व्हाट. अर्चना, आर यू सेइंग समथिंग? Okay, comparability allows for better comparability between different data sets or different feature within the same data set. तो कंपैरिजन करने में भी काफ़ी इजी होगा आपको, राइट.
ओके, ठीक है। नॉर्मलाइज आपने करना सीख लिया और पाइथन से भी सीख लिया, ये तो बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि नॉर्मलाइज हम लोग बेसिकली कंसेप्ट करते हैं और पाइथन से कोड नहीं देखते उसका, तो आपने आज कोड भी देख लिया। ओके, नेक्स्ट इज पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, power law distribution is a type of probability distribution characterized by the fact that the frequency of an event varies as the power of some attribute of that event. It is often used to describe phenomena in various fields such as physics, biology, economics, and social science. In a power law distribution, the probability of P of particular event is greater than all the events. That's a random variable X is greater than or equal to। मतलब इसमें ये बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो और एक कुछ इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कंपेरेबिलिटी बहुत कम हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ दे देता हूँ। अ, पहले एग्जांपल दिखा देता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द वर्ल्ड। तो आपने देखा होगा कि स्मॉल नंबर ऑफ पीपल होल्ड द मोस्ट ऑफ द वेल्थ। इस दुनिया में मोस्टली कहते हैं कि 20% पीपल ही 80% ऑफ द मनी होल्ड करते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल इसका मैं आपको दिखाना चाहूँ ग्राफ। सी दिस वन, बाय द वे आई हैव इट हियर आल्सो। दिस इज द ग्राफ, ब्लू वन। सी मोस्ट ऑफ द डेटा इज occupied by a few data, and more and 80% of data is having the very less height। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ कहने का मतलब क्या है कि बहुत कम पोर्शन के पास बहुत सारा इंटेंसिटी है और बहुत सारे डेटा के पास लेस इंटेंसिटी है, राइट। दिस इज, ठीक है, चलते हैं ऊपर दोबारा से। तो करेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं, हाउ डज इट लुक। यू विल सी हैवी टेल्स, मीनिंग दैट द लार्ज इवेंट although rare are more probable than they would be in the distribution like normal distribution। तो कुछ ही जो इवेंट्स इवेंट्स होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एंड स्केल इनवेरियंस, the shape of the distribution remains the same regardless of the scale at the which it is viewed। This property is known as a self similarity or scale invariance। Okay, so do you people have some more example of this power law distribution? कोई भी इवेंट हो जिसका अगर हम ग्राफ बनाए तो ऐसा ग्राफ बनाए, मतलब कोई कुछ ही इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो और बहुत सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो। इफ़ यू हैव सम रियल लाइफ एग्जांपल, प्लीज शेयर। रियल लाइफ एप्लीकेशन किसी ने शेयर नहीं किया या किसी के पास नहीं है क्या? प्लीज शेयर द रियल लाइफ events which is having a probability like this power law। एक तो मैंने बता दिया, इट इज वेल्थ।
Okay. Okay. Next topic is central limit theorem. How we can convert our uneven data into normal distribution. Before I think central limit, I should do this skewness. So what is skewness? Skewness is a measure of asymmetry of the probability distribution of a real valued random variable about its mean. It indicates whether the data points are skewed to the left. Left one is called negative skew, right one is called positive, and skewness help in understanding distribution in and spread or data points in the data set. This is positive, the blue one, and the green one is negative. So in positive skew, what is the characteristics? It's talking about this blue one. So you'll see the right tail, larger value is longer or fatter than the left tail. So you will see a little bit skew on the right side, like a long tail on the right side. तो ऐसे डेटा का जो मीन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद आता है इसका मीडियन फिर मॉड. मेरे ख्याल से दिस डेटा इज वेरी नाइस टू सी दैट. हाँ, तो हम लोग इसकी बात कर रहे थे पॉजिटिव वाले की. तो आप देख लो इसका मोड आता है यहाँ बीच में और मीडियन यहाँ और मीन सबसे आखिरी में इधर बिटवीन द लो वैल्यू एंड हाई वैल्यू. तो किसी का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेयर स्मॉल नंबर ऑफ पीपल आर सिग्निफिकेंट हायर सैलरीज. ठीक है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ नंबर सम ऑफ पीपल आर अर्निंग हायर, मोस्ट ऑफ द आर अर्निंग लेसर. ठीक है, हमारा नेगेटिव स्क्यू में होता है हमारा ये द लेफ्ट टेल, ग्रीन वन, द ग्रीन वन. The left tail smaller values is longer or fatter than the right tail. इसका मीन सबसे छोटा होता है, मीडियन देन मोर. See this. The mean is less than the median, which is less than the mode. So age at retirement.
where a small number of people retire much earlier than the average. तो आप बोलोगे कि एक एक एज के बाद मतलब आफ्टर सम एक्स इस मोस्ट ऑफ द पीपल रिटायर एट दिस एज, मतलब लेटर फेज में ही रिटायर होते हैं। अगर आप देखोगे कि ट्वेल्थ पास करने की प्रोबेबिलिटी देखोगे तो आप बोलोगे कि शुरुआत में ही एज के मोस्ट ऑफ द पीपल पास इट। रिटायरमेंट की देखोगे कि तो मोस्ट ऑफ द पीपल एट लेटर एज गेट रिटायरमेंट। ठीक है। जीरो क्यूनेस, यहाँ पे इट इज ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल। मेन मीडियन मोड कम्स एट द सेम लाइन, इट्स कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वी हैव सम फॉर्मूला आल्सो हियर मेजरिंग दिस क्यूनेस। So skewness is typically quantified as follows. Pearson's first skewness coefficient, so 3 times mean minus median upon standard deviation. This is how you can find skewness. Pearson's second skewness coefficient, the formula is given. Moment skewness, you can even find it. तो अगर सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद अगर इट इज जीरो, इट मीन्स इट इज परफेक्टली सिमेट्रिकल, or if it is more than zero, the data is positively skewed. If the value is less than zero, it means data is negatively skewed. Okay, let's read the skewness application. Stock return, we can say it is a part of a skewness. So quality control, maybe you can see the skewness here. तो किसी बीमारी के होने और उसको सही जल्दी रिकवरी होने का भी, उसका भी, इफ यू मेक अ ग्राफ इट विल बी स्क्यूड। कई लोगों की बहुत जल्दी सही हो जाती है, कई लोगों की बाद में सही होती है। Distribution of pollutant concentration. Okay, let's use this formula. Okay, this one. I am giving you a data. एक से लेके 10 तक वैल्यू बनाई, वो भी रैंडम।
ठीक है तो just find out whether it is skewed or not. You can create 50 data set also. So plt dot plot, if we do, and p dot linspace, yes, from 1 to 50 I will create counting only, simple counting you can see here. Yes, 1 to 3. So this will act as a x for my data. And on the y side, you can say the height of the bar should be according to the this data. Plt show you can do. Oh, sorry, it should be bar.
Student, is it skewed or not? Prove me with the help of this formula, the first formula. Yeah, I know it is. Okay, prove me with this formula. Tell me what value you are getting. You can generate random values like this. All right. So just do this and tell me the answer in the next class. Till then, we'll meet tomorrow. Have a good day. Bye bye. See you soon. Tomorrow we'll cover another topic.